Good morning, students. Myself, Rashmi Yande, your science teacher. Students, from your science syllabus, we completed our first and second lesson. Today we are going to start third lesson, diversity in living things and their classification. In this lesson, first of all, you have to understand the meaning of diversity. Diversity, that means variety. In Marathi, the meaning of diversity, it is vividhata. Whatever the variety of plants are there. Living things, that means only plants are there? No. Plants, animals, insects, they all are included as a living things. So diversity in living things, that means a variety, number of different types of plants, animals are there, and according to this variety, their classification is also there. First point of your lesson, that is the diversity in plants. Various types of plants are found in many places around us. Some plants like grass are short, while others are tall and have a canopy. Canopy, that is nothing but a crown-like structure. Around you, if you observe, some plants are very tall. Their stem, their height, they are very long. Many branches are there. Some plants are very short. Some are the climbers. So, different types of variety of plants are there. Some plants grow underwater, while some other floats on water, like lotus. We find that some plants grow even in deserts. Cactus, that this is a common plant which grow in desert, because in desert very less amount of water is there. Dryness is more. Moreover, we find that there is a lot of variety in same type of plant. For example, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. You can ask to your parents, especially you can ask to your mother, variety of rice. In wheat also variety is there. And you know very well, in roses, the rose, it is a very beautiful flower, but there is a different type of colors are there, mixed type of colors are also there. In mangoes also flavors are different one. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Ordinary plants, that means common plants, जिनको रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, ये हो गए ऑर्डिनरी कॉमन टाइप ऑफ प्लांट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम, लीव्स, रूट्स नहीं होते हैं. लेट अस स्टडी द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द प्लांट्स. लुक एट दिस पिक्चर. In this picture also, shrubs are there, plants are there, huge branches like structure, and that type of plants are also there. So here also tall plants are there. So this type of variety is observed in our nature. Plants make their own food in sunlight. We know that the name of the process. Which process? Photosynthesis. With the help of photosynthesis, plant make their own food. Such plants are called autotrophic plants. Auto, that is the self mode, trophic, that is the nutrition. For example, the hibiscus, pomegranate, periwinkle, etc. Some plants like funguses, loranthus, dodder use other plants for food and are said to be heterotrophic. In second lesson, we discussed about the heterotrophic animals like tiger, lion, because they are depend upon the other animals for their food purpose. Here in plants also heterotrophic plants are there. Heterotrophic यानी क्या? ऐसे plants जो food purpose के लिए दूसरे plants पे depend रहते हैं.
कौन से एग्जाम्पल्स? फंगसेस आर देयर, लोरेंथस, डॉडर, these are the common example. Plants like the pitcher plant even consume insects. They are insectivorous. Insectivorous, that is nothing but the which consume the insect, यानी उनका न्यूट्रिशन, उनका फूड क्या हो गया? इंसेक्ट हो गए. So they are the insectivorous. So according to the mode of nutrition, कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स. ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स and insectivorous plants. After that, next point it is the structure of plant. Commonly, if you observe carefully, the plant have flowers, leaves, stem, roots, fruits. These are the parts of the plant. But here in this diagram, the main parts or the structure of the plant is there. Plant structure can generally divided into 2 parts. The stem which grows above the ground and the root which grows below the ground surface. 2 parts. जैसे हम हमारे बॉडी का बोल सकते हैं कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट में जैसे ब्रेन आता है, हेड, आईज, फेस जो है वो अपर पार्ट में आता है, हैंड्स, शोल्डर्स. मिडिल पार्ट में स्टमक एरिया एंड लोअर पार्ट में लेग्स, सो टोज. दीज पार्ट्स आर इन द लोअर. सो वैसे ही अगर प्लांट के हम टाइप्स देखें, सो 2 पार्ट्स में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे पार्ट्स जो सॉइल के अबाउ दिखते हैं, दैट मीन्स स्टेम्स, branches, that is the leaves are there, flowers are there, fruits are there. And second part, it is the underground part, that is the root area, because roots are grow inside the soil. The root, stem and leaves are the main parts of plants. Main 3 parts are there: root, stem, leaves. From time to time, plants bear flowers for reproduction. Seasonal. Seasons रहते हैं. In that season, flowers are also produced. And main function of flower, it is useful for the reproduction. Flowers are transformed into fruits. कुछ plants में फ्लावर का कन्वर्जन जो होता है वो फ्रूट्स में होता है और वो फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं. Fruits have seeds and that seeds give rise to new plants. From that seed again new plant is formed. Now the main parts and the description of that parts. Observe carefully this diagram. First part, it is the flower. This is the most attractive part of a plant because flower have different colors. उनकी खुशबू होती है, फ्लावर्स की खुशबू होती है, कलर भी उनका बहुत अट्रैक्टिव होता है. It is connected to the stem by stalk which may be long or short. अब ये फ्लावर कहाँ कनेक्टेड होते हैं? Look at this. These flowers are attached to the stem with the help of stalk. That stalk may be short or may be long. A flower has a typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन. सेकेंड, इट इज़ द लीफ. द लीफ इज फ्लैट. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. क्यों? बिकॉज इन लीफ क्लोरोफिल इज देयर. ड्यू टू दैट क्लोरोफिल, leaves are green in color and leaves make their own food. That means that plant make their own food with the help of leaves. So they plays very important role in production of food. Leaves are mainly of 2 types, simple and compound leaves. Simple leaves, the structure of simple leaf. Example, hibiscus. Hibiscus यानी जास्वंदी का फूल रहता है ना, उसको हम बोलते हैं हिबिस्कस. उसका अगर पत्ता देखेंगे तो सिंपल, ये क्या हो गई? स्टाक. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. एंड कंपाउंड लीफ, दैट मीन्स एक स्टाक को
3, 4, 5, 6 ऐसे पत्ते अटैच है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल रोज़ के अगर पत्ते देखेंगे तो उसके पत्ते कैसे होते हैं, एक ऐसी स्टाक रहती है, उसको 5, 6 ऐसे पत्ते अटैच होते हैं, दैट इज द कंपाउंड, मेनी लीफ टुगेदर। थर्ड पार्ट, इट इज द स्टेम। The height, shape and size of the plant depends upon the stem. This is the structure of stem. सबसे फर्म, सबसे मजबूत रहता है वो होता है स्टेम, क्योंकि वो प्लांट को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है, और ब्रांचेस जो है वो सब वो स्टेम पे ही डेवलप होते हैं। The stem carries out the functions of production, conduction and storage of food. क्या फंक्शन है स्टेम का? प्लांट को सपोर्ट करना, सपोर्ट देना, ये तो उसका फंक्शन है ही। उसके साथ ही प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। फूड प्रोड्यूस, समटाइम्स स्टेम ऑल्सो प्रोड्यूस द फूड। कंडक्शन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food or conduction of the food, and storage of food, whatever the excess food, that food stored into these areas, stem area. In some plants it has the function of reproduction. कुछ ऐसे plants है जिनमें reproduction भी stem के through होता है. It gives support to other parts of the plant. As I told you, they give support to the branches, and to the branches leaves are there, फ्लावर्स आर देयर, फ्रूट्स आर देयर. सो इन सबको सपोर्ट देने का काम कौन करता है? स्टेम. आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, इट इज द फ्रूट. फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स. आप देखोगे मैंगो, ऑरेंजेस, मेनी फ्रूट्स आर देयर. उनका शेप कैसा है? अलग अलग है. उनकी टेस्ट भी अलग अलग है. फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स. Some fruits they have many seeds. Some fruits they have only one seed. The pods of beans and peas are actually fruits. हमको क्या लगता है वो कौन से पार्ट्स है? The pods of beans. Beans के जो pods होते हैं and peas, तो उन they are actually fruits. तो last part, it is the root. Roots hold the soil firmly and anchor the plant. The main function of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. हम plants को water supply करते हैं. So the main function of roots are the absorption and transportation. Roots अगर absorb नहीं करेंगे तो plant को nutrition, water नहीं मिलेगा. Okay? The roots of the carrot and radish also store food. There are two types of roots, taproot and fibrous root. Taproot. This is the example of taproot. Taproot यानी क्या? Tapping is there. This is the structure of taproot. Onions आपने देखे होंगे. Onions का जो पार्ट होता है रूट का, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा fibrous root. और हिबिस्कस, बेनियान ट्री, इनके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं टैप रूट. नाउ स्ट्रक्चर इज ओवर, बट द मेन क्वेश्चन इज देयर कि ये क्लासिफिकेशन क्यों करना है प्लांट्स का? वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज बीन कलेक्टेड. बिकॉज डाइवर्सिटी इज देयर, वैरायटी तो बहुत है प्लांट्स की. तो क्लासिफिकेशन क्यों करना है? कन्वीनियंस के लिए. हमको अगर स्टडी करनी है तो उनके पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, देयर पैटर्न, देयर ग्रोथ, देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, वी कैन क्लासिफाई देम. द साइंटिस्ट कार्ल लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. Initially, it was his method of classification that was used by all. Now, next point, it is the classification of plants. We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surroundings.
It is easy to classify the plants on the basis of this observation. First type, it is the trees. According to the classification, the first it is the trees. What are the similarities between a mango and a banyan and a tamarind tree? You observe these trees. Mango और banyan tree तो common है. Tamarind also common. सो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है? इनके जो ब्रांचेस है वो बहुत डेंस, बहुत ब्रांचेस होते हैं ये प्लांट में, और इनका जो स्टेम एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. वेल डेवलप्ड, वेरी फर्म, एंड it is very hard and strong. So they are included into the trees. Some plants grow tall, their stem or trunk is hard and strong. This is the stem or trunk area, and it is very hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers and fruit for many years. एक बार प्लांट लगाएंगे तो बहुत साल वो क्या देते हैं हमको? फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं. सच प्लांट आर कॉल्ड एज द ट्रीज. ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल, दैट इज दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. पेरेनियल प्लांट्स. सेकेंड वन, इट इज द shrub. You observe the hibiscus plant or oleander plant or lantana plant. Some plants grow close to the ground. उनकी अगर हाइट देखेंगे तो वो बहुत हाइटेड या बहुत हाइट में ज़्यादा नहीं होते हैं. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. स्टेम उनका भी हार्ड और थिक होता है, बट टॉलनेस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो ट्रीज़ है उससे इनका टॉलनेस क्या होता है? कम होता है. The oleander, hibiscus, lantana, coranti and rose are shrubs. They may grow up to 2 to 3 meters. अगर हम हाइट के हिसाब से देखेंगे तो ओनली 2 to 3 meters इतनी उनकी हाइट होती है प्लांट की. Herbs grow 1 to 1.5 meters tall. The stems of the herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes. Flexible यानी बहुत strength उनमें नहीं होता है. Easily they can move और easily they can bend as compared to those of trees and bushes. Herbs may live for a few months or up to 2 years. Lifespan इनका कितना होता है? 2 years. According to the size and height of their stems, plants can be classified into 3 types: trees, shrubs and herbs. Remaining part we will continue in next lecture. Thank you.